Welcome back, everyone. In today's video, we are going to start a new topic, and that is time and timetables. In this topic, we are going to study about different units of time and how can we use those different units in order to convert them into each other, right? अच्छा जी, हम सबसे पहले इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? We are going to learn about conversion of time. और इसके अलावा वी आर गोइंग टू यूज़ सम ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशंस जिसमें हम टाइम को मेजर करेंगे और उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी साथ में यूज़ करेंगे। ठीक है, दीज टू ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द टाइम टेबल्स फॉर सॉल्विंग द रियल लाइफ सिचुएशंस एंड टू सॉल्व द एग्जांपल्स। ठीक है। Okay, let's move to the next slide. In the next slide, we are gonna study, we are gonna do some brainstorming और हम अपने सारे पुरानी इंफॉर्मेशन को जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको हम रिफ्रेश करेंगे। alright? Okay, so time has actually 7 units. टाइम के कितने यूनिट्स होते हैं? 7 units होते हैं। हम टाइम को 7 units में मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट इज second. Second is minutes. And by the way, second is actually smaller than minutes. Minutes जो है वो bigger होता है. Then comes hour. Then comes a day. Fourth and fifth one is a week. उसके बाद sixth is month. And seventh is a year. तो ये 7 units हम यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। ओके, लेट्स डू द फॉलोइंग एग्जांपल। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग दिस यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, इनमें से हम यूनिट ऑफ टाइम यूज करेंगे और इन एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, वी मेजर आवर एज इन, हम अपनी एज किस यूनिट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं? वी मेजर इट इन द फॉर्म ऑफ years. For example, I can say that I am 25 years old, or I am 26 years old, or you guys can say that you are 12 years old, or you are 10 years old. ठीक है, तो हम अपनी एज को years के हिसाब से मेजर करते हैं। Let's move on. I sleep about 8 dash each day. हम day को किस चीज़ में मेजर करते हैं? यानी day के लिए हम कौन सा यूनिट ऑफ टाइम यूज़ करते हैं? हम hours को यूज़ करते हैं। ठीक है। Alright, next we have a sports match lasts for 90 dash. I'm sure आप सब लोगों ने स्पोर्ट्स मैच देखा होगा, क्रिकेट देखी होगी, फुटबॉल देखा होगा, राइट? तो आप देख सकते हैं कि वो मैच कितनी देर तक लास्ट करता है। तो डेफिनेटली इट लास्ट फॉर यूनिट ऑफ टाइम दैट वी विल यूज ओवर हियर इज मिनट्स। ठीक है, कि एक मैच 90 मिनट्स के लिए लास्ट करता है। Okay, so let's move on to the next slide. We are going to discuss some of the facts about time. ठीक है, हम उनको रिवाइज करेंगे अपने माइंड में, जैसे कि how many months are there in a year? एक year में कितने months होते हैं? It has 12 months. ठीक है, ये हम सबको पता है. We are just going to refresh the um, old concepts and we are then gonna move on in solving the questions. Okay, what about 1 month? एक month में कितने days होते हैं? ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 30 या 31 डेज होते हैं। ठीक है, एक मंथ में। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव के एक ईयर में, ठीक है, एक साल में हाउ मेनी डेज आर देयर? देयर आर एक्चुअली 365 डेज। कितने डेज होते हैं? 365। ओके, इफ वी सी के मंथ में, इन 1 month, ठीक है, हाउ मेनी वीक्स आर देयर? एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? तो देयर आर एक्चुअली 7 weeks, सॉरी, देयर आर एक्चुअली 4 weeks इन अ मंथ। एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 weeks होते हैं। ओके, इफ वी मूव टू द वीक्स,
तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? यस, दैट इज राइट। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट ऑफ टाइम एंड दैट इज 1 डे में, एक दिन में हाउ मैनी आवर्स आर देयर, कितने घंटे होते हैं, राइट? तो एक डे में 24 आवर्स होते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी के 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। सो द 1 आवर हैज हाउ मेनी मिनट्स? इट हैज 60 मिनट्स। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है? और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? दैट्स एन इजी वन एंड दैट इज 60 seconds. I want you guys to take a moment and to just go through this whole facts, ताकि आपको ये आगे जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करें उसमें आपको ये चीज़ हेल्प करे, ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करे। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, let's practice what we have learned right now. The first question that we are going to look at is के 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं। नाउ हम इधर क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली कन्वर्टिंग द टाइम कि 2 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं। रिमेंबर वी लर्न दैट इन 1 मिनट हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर? देयर आर एक्चुअली 60 सेकंड्स, ठीक है? तो हमें अब फाइंड क्या करना है कि हमारे पास 2 मिनट्स हैं, ठीक है, और हमने उनको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। ऑलराइट, सो सेकंड्स में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? आप यू आर गोना डू दिस थिंग एंड दैट इज 60, 1 मिनट हो गए प्लस 60, कितने मिनट्स हो गए? 2 मिनट्स, राइट? So we are gonna write it over here that 60 plus 60 is how many? Let's do a rough work as well और फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। 60 plus 60, 0 and 0 comes down. We're gonna do the addition part, okay? 6 plus 6 is 12. So that means in 2 minutes there are 120 seconds. Likewise, we are going to move to the next example और इसमें क्या है कि 3 minutes में कितने seconds होते हैं, ठीक है? तो 3 minutes में हमें 3 minutes के लिए कितने 60s को ऐड करना पड़ेगा? 3 60s को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? We're gonna write over here 60 plus 60 plus 60. So how many minutes does this become? Let's do a rough work over here. 60 plus 60 plus 60, and the answer is 180. So we're going to write over here that in 3 minutes there are 180 seconds. Remember, we are doing the addition part over here in which we are adding seconds into each other in order to convert the number. We will continue in the next video and solve rest of the example. See you guys again.